Am I audible? Good morning everyone. I'm Dr. Sumeet Gupta, Associate Professor Zoology from Bharati University as well. Thank you Dr. Namrata for giving me great opportunity to introduce today's special guest, Dr. Sumeet Gupta Sir. Dr. Sumeet Gupta is affiliated as Professor in the Department of Information Technology and System at IIM Raipur. He received PhD as well as MBA from the National University of Singapore and BE from GEC Raipur. He has a total of 18 years of work experience in industry, teaching and research, during which he worked with L&T India, the Logistics Institute Asia Pacific, Singapore and SSGI Bhilai before joining IIM Raipur. He participated in Global Colloquium at Harvard Business School in 2015. He has held visiting faculty assignment with IIT New Raipur as well as Huan Hong University of Science and Technology Wuhan, China. He has been accredited by AIMA as an accredited management teacher and was awarded Professor Manudhai M. Shah Memorial Award by Indian Commerce Association for the year 2017. He was also awarded President Graduate Fellowship at National University of Singapore. He has published more than 100 papers in top-ranked international journals, DSS, Omega, IJIM, etc., and more than 30 papers in international conferences, ICIS, ECIS, AOM, etc. He has also edited 2 books in the area of humanitarian logistics and supply chain. His research interests include electronic governance, e-commerce and business analytics. He has conducted several consultancy projects with both private and government bodies in India and abroad and has conducted many training programs. Thank you. Now, Dr. Namrata, over to you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Saman. Now I would like to invite our guest, Dr. Sumeet Gupta Sir. Sir, this is a request. Kindly use both the language English and Hindi. ठीक है कोई दिक्कत नहीं thank you Thank you so I hope I'm sorry for the delay actually because there were too many things going on, so earlier I kept it on Saturday but somehow I had to shift it to Friday. It's okay sir, no problem. I'm looking for a pencil actually okay so I'm going to whatever I will discuss is going to be I'm not made any PPT slides and so on. I just want to know before I start how many of you are from, I mean, is this a cohort, a management cohort or it's an engineering cohort? Sir, there are candidates from 28 different subjects like management, engineering, all. मेरा नेट रुक गया. You are not all sectors clearly, sir. You are not able to hear me? Sir, no audible. Sir, from all sectors. Some noise in my voice? Sir, clear, okay, very clear. clear. We switch on. Very clear, okay. I'm asking, is this a management cohort or is there also, management or from engineering all both? courses. Okay. Because, technical, non-technical, science, social science, every. Okay, fine. So let me just check one thing. Let me share my screen and we are going to have a discussion on that. Also,
Sorry, there was a disconnection. So which one to type? I just want to know whether you are able to see my screen or not. No, sir. Now visible. Now it's visible? Okay. Yes. Thank you. Good. So let me go to my screen. So the question is about selection of appropriate statistical tools, and I generally basically we talk about management systems and what kind of tools are there in management. So we are going to talk about something called tools related to prediction, tools related to description, tools related to classification. So whenever we select appropriate statistical tools, before I begin, I want to know how many of you, what kind of tools do you use in your analysis or in your research? What kind of tools do people use? You can just speak up if possible. Anyone? Sir, correlation, regression analysis, ANOVA, ANOVA, okay. So now, ANN, backward propagations. and backward propagation is part of ANN only, and Yes. okay. So these are the things. Okay. So I think you basically know the techniques which you will need to use. Okay. Now we'll divide those techniques into univariate, bivariate, and multivariate. So let me just put up a short form, univariate. Whenever you have only one variable in your analysis, you use these univariate techniques. And we can call it as one-way ANOVA, which is a univariate technique. You can also use t-test, okay, or z-test. Z-test is normally not used because we are taking a sample and applying to the population. So therefore, it's not really used. But we use is t-test. Okay, and then there are also bivariate techniques. So anyone can tell me when there are two variables, what kind of techniques to use? When there are two variables, what kind of techniques to use? Anyone? So primarily we use chi-square. Okay, so chi-square is an analysis of frequencies. So let me start with a very, very basic techniques in one way. Okay, to analyze any data, there are two main representatives of the data. Analyze any data, we'll say data or variable. We'll say there are two main representations. What are those? How do we represent any data or any variable? How do we represent that? Any basic representation of a variable? So I would like it to be, what is that, more interactive. Yeah, please. Anyone? Well, how do you identify, or let's say, I will give you an example. Let's say you want to describe the age of people in a class. How would you do that? How to describe the age of people in a class? Anyone? I have to wait till I get any response. Sir, we can range. We can find out the range. Yes, sir. Okay. What else? Range could be one. Anybody else? Because that is the very basic. If that is not there, then multivariate analysis and other things are big things. सबसे पहले तो basics पे ही जाना पड़ेगा. How would you describe a data? How would you describe a data? I'm giving a simple example. How would you describe the age of a class? Of course, one is range. You can say, okay, this is the range of a class. What else? What else could be there? आप common sense से बताओ. Sir, it varies from student to student. Well, that is always there. But if you want to describe it, how would you do that? Sir, in year and months. अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको जो है आपका रिजल्ट बताना हो, आपके क्लास का रिजल्ट क्या है, तो आप कैसे बताओगे? परसेंटेज में. परसेंटेज क्या? एवरेज निकाल के सर. एवरेज. तो एवरेज क्या चीज? मार्क्स का परसेंटेज का क्या चीज का एवरेज? टोटल परसेंटेज का एवरेज निकाल के. परसेंटेज का एवरेज. कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए हैं और टोटल नंबर
स्टूडेंट कितने हैं उसके पार्क बेसिस में। पे परसेंटेज निकालेंगे कि हाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हम्म, अपीयर कितने हम्म, हुए हैं, फिर उसका हाँ परसेंटेज निकलेगा। हाँ, ये हुआ किसी भी डेटा का दो पार्ट, है ना। सो व्हेनेवर वी हैव अ डेटा, सो लेट्स से this is the distribution of the data, so we say divided by, if we say two things, one is mean and Median. one is Median. mean, median or mode, और one is the, so what we call as range or standard deviation, ठीक है, Standard deviation. mean or standard deviation. So we say we want to know the central tendency of the data and we want to know the dispersion of the data. डेटा का जो मिड पॉइंट है वो क्या है और डेटा का जो डिस्पर्शन है वो क्या है, रेंज क्या है। रेंज बेसिकली वी डोंट टेक रेंज, वी टेक स्टैंडर्ड डिविएशन। कुछ भी ले सकते हैं ना, आप मीन ले सकते हो, मीडियन ले सकते हो, मोड ले सकते हो। ओके, वी कैन टेक मीन, मीडियन, वी कैन से दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी। ये डेटा का जो सेंटर है ये है, ये इसका मीडियन है और ये जो इसका मोड है, मोड। So mean, median, mode, I hope you all know. I probably would not want to get into that basic right now, but I just want to know, tell you यही चीज कि कोई भी डेटा आप लोगे उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। एक होता है उसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसका एवरेज क्या है या मीडियन क्या है, मोड क्या है, और उसका जो डिस्पर्शन क्या है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीएशन रेंज। ओके, सो जो भी यूनिवेरिएट एनालिसिस। सो जब भी हम रिसर्च में सैंपल करते हैं, कोई भी है ना, कोई भी रिसर्च के लिए सैम्पलिंग करते हैं तो सैंपल से ये बताते हैं कि इसका जो रेंज है और सेंट्रल टेंडेंसी है, ये जो है पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन से मैच कर रहा है कि दैट इज व्हाट इज द एंटायर सैंपलिंग प्रोसेस इन रिसर्च। ओके, द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ माय सैंपल मैचेस द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द population. That is what we try to prove here in research. Okay, so now mean is always of, अगर आप डेटा टाइप्स लोगे, let's talk about the data types. कौन कौन से डेटा होते हैं टाइप, so it depends on that how whether what kind of central tendency will be there, what kind of data types you know, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के डेटा हो सकते हैं। primary and secondary. Pardon? Two Primary types, data, secondary primary data. and secondary. Primaries. No, that is the data collection that you do. I'm talking the type of data. For example, age कैसा डेटा है, या अगर मैं बोलूँगा कि Continuous and discrete. Continuous and discrete. Continuous and discrete could be an answer. Continuous and discrete. Any other way you want to know? Any Quantitative. qualitative and quantitative. So that's why I put here. Others are not wrong answer. They are correct. Qualitative and quantitative. Sir, categorical, scaling, Yeah. percentage, is types. Right. Good. So who said that? Categorical and so on. So qualitative are two types. One is categorical and one is ordinal or scale data. Similarly, quantitative is interval and it's also ratio. So categorical data क्या होता है? कैसा होता है categorical data? लैपटॉप टच Any example of categorical data? Age, sir, male, female. Okay. Why is it is categorical? Sir, it's basically qualitative data. Yeah, Categorical data is qualitative data. What I think. Yeah. So you're right. I'm already writing it qualitative. No? Qualitative, categorical. Only one type of qualitative data is categorical data. So now give me an example. One is gender, age. Sorry, gender, male, female, and so on. Why is it categorical? देख ले किसी और के मोबाइल Because we can classify it किसी into और के groups. मोबाइल से स्क्रीन बैक कैमरा से ले लो। We can classify into groups. Okay. Any other answer to this one? Any other answer to this one? An example, ordinal data or scale data? An example of scale data. No, sorry. What is that? Ordinal data. Yeah, you can say scale data, scaling that data which can be rank data. Any example of that? Sir, any arithmetical can be said as ordinal data. Any arithmetical data. Why? Can we rank the male and female, for example, here gender, male and female? Can we rank them? They are not scale data. Sir, low income, middle income, middle income, high income. Yeah, so low, middle, and high. So I'm going to start with this one, then we'll go little higher, and we'll do it quickly. So low, middle, high. So there is a ranking we can do, and these are also categories. These are not actually, these are categories, low, middle, high. These are not necessarily absolute numbers. Interval data,
Now, quantitative starts with interval and ratio. Interval could be temperature. Now, temperature has no absolute zero. You cannot say that 0 degree there is no heat in the what is that in any entity. There is some heat. That heat is 0 degree. It's at the ice point. Okay, so temperature is a scale. For example, another example will be, let's say you want to measure satisfaction on a scale of 1 to 7. So, or 1 to 7. So, let's say 1 is low satisfaction, 7 is very high satisfaction. I think highly satisfied, highly dissatisfied. Now, that is actually an interval scale because there is an absolute zero. So, what do you mean by zero satisfaction? Some satisfaction must be there, or some dissatisfaction must be there. Okay, or I am neutral, right? But these are categories which are given to certain points. Similarly, when you say that the temperature of a body is 30 degrees. Now, what does it mean that the temperature is 30 degrees? We assign some value to the degree of heat. That's all, right? Now, ratio is zero speaks, for example, age, income. Now, zero income is zero income. Zero age is zero age, right? So these are the various data types. Depending on the data types, you have your techniques, statistical technique. Okay. Now, if you take univariate data analysis. So, in case of categorical data, what kind of technique will apply? You will take univariate or bivariate both. Let's take univariate or bivariate because they are almost. When there are two or more variables, what kind of technique will apply? For categorical data, what can you calculate? Can you calculate the mean? Can you calculate mean for categorical data? Yes or no? Oh, sir. क्या कर सकते हो फिर आप? चलिए नहीं कर सकते तो कर क्या सकते? हम मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते कैटेगोरिकल डेटा तो कर क्या सकते? Anyone? I see very less participation. I don't know. अगर आप कैटेगोरिकल डेटा का मीन नहीं तो मैं एग्जांपल देता हूँ. चलिए एक क्लास में जो है कुछ मेल और कुछ फीमेल बैठे हैं, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? जब मेल से मीन मोड क्लास, हाँ मीन निकल सकता है सर. मीन निकल सकता है मेल और फीमेल का. मान लीजिए आया कि 1.5 मेल्स एंड 2.5 फीमेल्स. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एज का निकल सकता है. एज का मैं इसकी बात कर रहा हूँ कैटेगोरिकल डेटा है ना. लेट्स से देयर आर फ्रॉम 20. हाउ विल यू डिस्क्राइब द लेट्स से देयर आर 20 मेल्स एंड 15 females in a class. How would you describe this class in terms of gender? Percentage wise, right? So in case of categorical data, you cannot calculate mean. कई बार रिसर्च में लोग जो है mean निकाल के दिखा देते हैं, ये हमारे gender का mean है. It does not make sense. The only thing that you can calculate in case of categorical data is what we call as mode. कितने लोग हैं, mode और frequencies, right? So categorical data only mode, and therefore we only calculate chi-square statistic in case of categorical. अगर आप bivariate लोगे तो आप केवल chi-square statistic ही निकाल सकते हो because chi-square test is an analysis of frequencies. कितने frequency थी, frequency data बोलते हैं ना, कितने लोग, कितने मेल, कितने फीमेल. That's frequency data. So you can only identify or only calculate mode in case of categorical data, and same thing in ordinal data. But you can also do additional. You can probably do some Z tests. Okay, so that is a different one. We call it as rank sum test. So these are all univariate tests. Now, in case of interval and ratio data, you can of course calculate mean. In case of ordinal data, you can also calculate median. Okay, or in case of interval data, you can calculate median. But for categorical data, you can only calculate more, right? And depending on that, the other techniques also. Now let's take this now to multivariate data. What is the meaning of multivariate? What is Sir, multivariate data? sir, more इसमें than three variables. मल्टी
Pardon? 3 और मोर वेरिएबल्स में सर चेंजेस करके आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है वो ऑब्जर्व करते हैं. 2 or more variables. ठीक है? Not 3, 2 or more variables. जी. Yeah, Charna, you were saying something. Charna Chandragar. यस सर, जिसमें जिसमें मल्टी वेरिएबल होते हैं. हाँ, 2 से ज्यादा. ठीक है? So let's say x and y, and let's say z. So 2 more variables. Then we can calculate multivariate data analysis. Okay. Now, the most basic multivariate data analysis is known as regression. अब रिग्रेशन कब लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, पहले तो ये भी क्लियर होना चाहिए, राइट? रिग्रेशन का पर्पस क्या है? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इन रिग्रेशन? सर बेस्ट फिट लाइन चेक करते हैं. यस, तो क्या करना क्या चाह रहे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इन रिग्रेशन? सर रिग्रेशन मैं बोलना चाहूँगी सर. सर रिग्रेशन हम वहाँ पर लगाते हैं जब दो वेरिएंट जो हमारे दो वैल्यू हैं उनमें रिलेशन पता करना होता है और वो रिलेशन बहुत ज़्यादा संबंधित होता है एक दूसरे से, यानी एक दूसरे पर वो डिपेंड करते हैं, तब हम रिग्रेशन लगाते हैं. Okay. So when we want to find out the relationship between two variables, जो भी दो वेरिएबल उसके बीच में संबंध हम निकालना चाहते हैं. Okay. So we'll say x1. Let's say there are variables x1, x2. So we'll say an x3, and there is a variable called y. So we want to say y is equal to some constant plus b1 x1 plus b2 x2 and so on. bn x. ठीक है? x1 x2 these are variables. ये जो है वेरिएबल है, y is a dependent variable. y कौन सा वेरिएबल है जो एक्चुअली डिपेंड करता है इन वेरिएबल्स पे, x1 x2. ना किसी रिसर्च में हम देखते हैं कि कोई y की जगह एज लिख देते हैं. y is a dependent variable means ये वेरिएबल जो है बाकी वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. कैन यू पुट y as age? अगर आप एज रखते हो तो एज इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ व्हाट? एज किस चीज पे डिपेंड करता है? y x पे डिपेंड करेगा सर. x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. Can age be a dependent variable? Can age be a dependent variable? Yes, sir. How? Okay. If we are talking about student's age, then student is independent. Always, it's a independent variable, and age. If we compare two variables, or not only in this case, if age of a student in relation to academic achievement, if we do like that, then it's a dependent variable only. Na age, according to age, the academic achievements also may vary. So age will lead to academic achievement, or academic achievement will lead to age? Both can be dependent on each other. मतलब you are saying that if my academic achievement is high, my age will be high? Not in all cases, but it may be, So sir. May be there is no possible. relationship. Where is the relationship? See, when you say that, you are saying two things. You Yeah. are saying that age can be dependent variable, and you are saying that academic achievement, your age leads to academic achievement. Is it necessary? It is not necessary, but if we set like that, if variables could be set like that, we can make one That as. is known as spurious relationship. Pardon, sir. हमको Once again. that's known as spurious relationship. Yes, sir. Spurious relationship is not a relationship. मेरे को छींक आई और जापान में वोल्केनो आ गया. कई बार बोलते हैं ना कि मेरे को जब छींक आती है तो वहाँ पे जी, तूफान आ sir. जाता है ना, उसको spurious relationship बोलते हैं. It has no value, no meaning in it, right? Okay. Now age is something which is there. It will always be there. My age is not going to be changed because I have done several things. Age will increase by time. With time, it will change. It's not a dependent variable. You can say yes. We want to find out the relationship between age and other variables of life. For example, the eating habits and other things, and we'll try to see whether the age of a person depends on that. I mean, the life of a person, life of a person. But age is actually not a dependent variable. So we have to very clearly see whenever we are doing this regression whether there is a relationship between variables or not. And this relationship should be specified by some
theoretical understanding. Okay. Now let's, so here is a variable. Now let's say I will give an example. I want to know the price of a car. Okay. Let's the price of a car is y. Let's say this y is the price of a car. तो क्या क्या वेरिएबल प्राइस को मतलब डिपेंड आई मीन बना सकता है? व्हाट ऑल वेरिएबल्स कैन इन्फ्लुएंस प्राइस? कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं जिससे प्राइस बनेगा, प्राइस बढ़ेगा घटेगा जो भी है? एनीवन? Engine and comfort level. Quality of Okay. car. Yeah. फीचर्स, जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उसके हिसाब से प्राइस डिपेंड करेगी सर। फीचर्स फॉर एग्जांपल Demand. Size. जैसे Size. कि बड़ी कार. साइज हो जैसे गया और आजकल जो मॉडर्न टेक्निक आ रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। AI जैसा कुछ है, या उसमें सेफ्टी फीचर्स इतने ज्यादा हैं, तो उसके हिसाब से ये सारे फीचर्स हैं जो कंफर्ट को हमारे डिफाइन करते हैं। ऐसे फीचर्स जिस पे ज्यादा होंगे और उस प्राइस पे जिसका प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर। ठीक है, सो माइलेज हो गया, योर इंजन Average facilities. सर एवरेज के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि कितना एवरेज देता है कार। So these features will lead to what price? They will lead to increase in price. ज़्यादा फीचर होगी ज़्यादा प्राइस होगा। It's a very very simple relationship. ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइस ज़्यादा हो तो साइज भी ज़्यादा हो। Opposite relationship. भी सकता है और नहीं Not भी। necessary. ये नहीं भी हो सकता। कई बार हम जैसे देखते हैं बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके व्हीकल्स 2 सीटर है, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है। जैसे मर्सिडीज है और भी दूसरी गाड़ियां हैं, साइज तो छोटा है लेकिन उनकी लग्जरी के कारण या उन ब्रांड वैल्यू के कारण उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। Right. So here we see that there is a one-way relationship between variables, independent and dependent variables. Okay, we are not talking about a two-way relationship. No, for example, demand increases price and price increases demand. So I mean reduces demand. That is possible. If there is a किसी भी प्रोडक्ट का अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगा तो मार्केट में उसका प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा। अगर किसी का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो जरूरी है उसका तो डिमांड घट जाएगा ना, उल्टा होता है। So it's not necessary. These are one-way relationships. Now let us say, now in this case, y is now one more. Let me write it down here. Y is equal to, let's say, beta naught plus b1 x1 plus and so on plus bn xn. Now in this case, this y is what? What kind of variable? अभी हमने 4 वेरिएबल देखे, कौन सा वेरिएबल है इसमें से? y किस टाइप का वेरिएबल होगा? What kind of variable should be y if you want to use regression? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट तो है ही है, पर किस टाइप का है? कैटेगोरिकल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो? ऑर्डिनल है सर। हाँ, क्या चीज क्या है? ऑर्डिनल, आई थिंक ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव हो गया ना। दिस विल ऑलवेज बी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अगर आप रिलेशन लगा रहे हो तो ये हमेशा या तो रेशियो होगा या इंटरवल होगा, एंड दीज वेरिएबल्स कुड बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों हो सकते हैं। In case of regression, they can be both. But dependent variable must be quantitative. Price is a quantitative variable. Income is a quantitative variable. आप लेकिन यहाँ पे आप जेंडर नहीं डाल सकते उसको। रिग्रेशन में आप जेंडर नहीं लगा सकते। You cannot say why should be gender male or female. It's impossible. Right? If I want to do that, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं I don't want to have y is quantitative, I want to have y is qualitative. And to have y is qualitative. ठीक है? Are you able to hear me? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. You want y to be qualitative and these can be any. तब क्या होगा? Qualitative मतलब categories or ranks. So here we use what we call as classification modeling. Classification modeling.
जब भी हमारा y क्वालिटेटिव होगा और ये वेरिएबल दोनों हो सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ और क्वालिटेटिव बोथ, देन वी यूज क्लासिफिकेशन मॉडलिंग। क्लासिफिकेशन मॉडलिंग क्या है? खरीदेगा नहीं खरीदेगा। मान लीजिए आपने फीचर दे दिए कार के, इसका माइलेज कितना है, एवरेज कितना है, और ये सब दे दिया। अब आप जानना चाहते हो कि वेदर द कस्टमर विल परचेज और नॉट। दो चीजें, विल परचेज और विल नॉट परचेज। अब इसमें क्या हो गया? कैटेगरीज क्या हुई? देयर आर ओनली टू कैटेगरीज, परचेज करेगा नहीं करेगा, राइट? लाइक करेगा नहीं करेगा, ओनली दीज आर कैटेगरीज। जब भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है, आप रिग्रेशन नहीं करते, यू हैव टू गो फॉर क्लासिफिकेशन मॉडल। एंड क्लासिफिकेशन मॉडलिंग की कई टेक्निक्स होती हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जो बहुत बेसिक टेक्निक होती है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंस इन द टेक्निक, more so just to give an idea. Or we can have logistic regression, or we can have classification tree, and there are many others, knife based and so on. ANN, knife based. ANN can also be used for regression modeling, knife based. They are data mining techniques. बाकी सब data mining। जब भी हमको क्लासिफाई करना है किसी भी चीज को, है ना, क्लास कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, A, B, C, there are more, could be 2 or more categories, then we use this classification model technique. I'll give an idea. मान लीजिए कि हमने दो वेरिएबल लिए x1 और x2, ये यूज कार के। अब देखो ना, जो पुरानी कारें बिकती है मार्केट में, उसके दो, एक हो गया उसका जो है एज हो गया उसका, और दूसरा हो गया माइलेज। ठीक है, दो वेरिएबल है, एज माइलेज। यूज कार का एज और माइलेज हम उसमें डिपेंड, हम जानना चाहते हैं कि लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे इन दो वेरिएबल्स के बीच। तो और भी दूसरे वेरिएबल हो सकते हैं, लेट्स टेक दिस एंड यू फाइंड आउट दैट, लेट मी चेंज द कलर। लाल वाले हैं, नो ब्लैक मीन्स परचेज, नो नॉट परचेज, विल नॉट परचेज, और रेड का मतलब है परचेज करेंगे, विल परचेज। ठीक है तो हम बोल रहे हैं कि अगर रेड है तो मैंने इसमें दिखाने, सॉरी, अगर रेड है तो खरीदेगा और ब्लैक है तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? हमारा मॉडल ये हो गया, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस B1 माइलेज और प्लस B2 क्या होगी एज, कितनी पुरानी कार है और कितना उसका माइलेज है। हम इन दो बेसिस पे कर रहे हैं, खरीदेगा नहीं खरीदेगा। y इज इक्वल टू परचेज नॉट परचेज, इट्स यूज्ड कार। आई एम मॉडलिंग, आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल मॉडल। अब इसे कैसे बताओगे, क्या करोगे इसमें? What will you do? How will you say that person will purchase or not purchase? When will the person purchase? When will the person not purchase? This basis model के basis. It's a very simple classification model. Many of you must be doing in your क्या बोलते हैं कि in your analysis. Yes. Sir, if price is low, then they will purchase. It may be an option. प्राइस तो मैंने डाला ही नहीं इसमें। सर तो x और x1 और x2 में क्या है सर? इधर x1 एज है
Okay. age, x2 mileage. Mileage. I'm taking these two variables. और भी variable हो सकते हैं, price भी हो सकता है, but right now I'm taking age और mileage बस. Sir, और X1 क्या बोले sir? Once again, please sir. age लिखा हुआ है ना age. Age. age मतलब कितनी पुरानी एज कार है. एज कम होना चाहिए, एज कम होना चाहिए, मतलब कार कम पुरानी और उसका माइलेज अधिक है, तो Yes. वो तो कर ही उसका देगा. ज्यादा चांसेस रहेगा जी। है ना. तो अब आप देखो मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ. I'll divide it basically here. मैंने एक यहाँ से डिवाइड किया. ठीक है. क्लासीफाई. अभी होगा माइलेज. लेट्स से माइलेज. और माइलेज नहीं बोल करके x2 बोल देते हैं. x2 लेस देन लेट्स से a. तो और हम एक और कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पे. let's say here. ठीक है. and let's say this one is x1 and sorry एक चीज कर देंगे. इसको इक्वल टू कर देते हैं. इक्वल टू b. ठीक है. तो अब हमको मॉडल बनाना है तो क्या लिखेंगे. हम ये लिख सकते हैं इसमें कि if x1 is greater than b. ठीक है. and x2 less than a, then what? Purchase or not purchase? परचेस। Not purchase. ठीक है. Not purchase. This is not purchase. ठीक है. ये black वाला जो purchase नहीं करेगा. जी. Now if x1 less than b, then purchase or not purchase? And if x2 greater than a, then Purchase. Purchase. and x2 less than b, then purchase. ठीक है. दोनों में बाकी केवल यही एक क्वाड्रेंट है. ये वाला जो क्वाड्रेंट है where he will not purchase and all the other quadrants the person will purchase. This is a model. This is a classification model. Simple classification model. इसमें dependent variable क्या है? Dependent variable क्या था? Dependent variable क्या था इसमें? Mileage and age. They're independent variable. Mileage. Purchase. Purchase करेगा नहीं करेगा. Purchase खरीदेगा नहीं खरीदेगा. ये तो एक वेरिएबल. This is a dependent variable. खरीदेगा नहीं खरीदेगा. Simple. ये कैटेगोरिकल वेरिएबल क्वांटिटेटिव तो नहीं है. तो अगर वेरिएबल कैटेगोरिकल है तो आप जो है क्या बोलोगे. आप जो है क्या यूज करोगे. क्लासिफिकेशन मॉडलिंग. ठीक है. Now, did you understand the difference between regression and classification? आपको समझ में आया Yes, sir. डिफरेंस. रिग्रेशन y वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव होना चाहिए और क्लासिफिकेशन y जो होना चाहिए दैट शुड बी क्वालिटेटिव. नाउ लेट अस से आई हैव नो डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. मेरे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं. जब मैंने डेटा सेट लाइक दैट जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता. जैसे मान लीजिए आप जो है डेमोग्राफिक ऑफ ए विलेज डेमोग्राफिक्स. कोई भी विलेज में गए वहाँ पे उन्होंने अपने डेमोग्राफिक डेटा दिया और इसमें आपको कुछ डिपेंडेंट नहीं मिला. अपने मेजर किया एज, जो मेजर्ड इनकम ऑफ पीपल, जो कितना कमाते हैं या कितना बनाते हैं एक साल में. फिर आपने जो है उनका एजुकेशन ले लिया और आपने ले लिया मैरिटल स्टेटस, आपने ले लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तरह की. Now in this data set you will find कि इसमें कोई clear dependent variable नहीं. इसमें कोई dependent variable नहीं है. क्यों नहीं? कि हमको dependent देखना ही नहीं है. Unsupervised techniques जिसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग में, इसमें कोई dependent variable नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं? सर यहाँ पर हम लोग कोरिलेशन लगाएंगे. कोरिलेशन. ओके. और कोरिलेशन क्यों लगाएंगे? इस कोरिलेशन तो खैर आप दो वेरिएबल में लगा सकते हो, बट दैट इज अनदर थिंग. बट हम यहाँ पे कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं. कोरिलेशन कैन फाइंड आउट बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स, राइट.
यहाँ पे कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन फाइंड आउट क्लस्टर्स। क्लस्टर्स ठीक है, क्लस्टर्स मतलब कि कुछ ग्रुप्स हैं जो बराबर साथ साथ में नहीं करते। आगे to give me just one because there are a lot of calls coming. Give me one second. Yeah. So we want to find out clusters in data. So clusters क्या होता है? Just a grouping. है ना? For example, मान लीजिए कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया। अब आप कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे, कैसे निकालोगे कि यहाँ पे कौन लोग, किस टाइप के लोग थे? तो जो लोग वहाँ थे, आप ट्राई करोगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, उसको क्लस्टर करके देखोगे किस टाइप के लोग एक साथ आ रहे हैं, किस टाइप के लोग संदिग्ध दिख रहे हैं इसमें, राइट? Who are the people who are looking like outliers in this? Possibly they may be the culprits. You can find out or not? Yes, sir. आप कुछ बोल रहे हैं अजय जी? आपकी आवाज नहीं आई है, मतलब clear, some noise is there. Okay. ठीक है. You can find out clusters in data. You know, it could be something like this. You know, some people are here, and there is another cluster, and then there is a cluster. So whenever you want to find out groupings in data, we use cluster analysis. और ये बहुत जगह यूज होता है. It can be used in medical imaging. It can be used in clustering the vibration of metals, जो आप लोग इंजीनियरिंग में करते होंगे. You want to cluster the identify whether there are clusters of things which are outside other clusters which are very unique. Then maybe you may want to give some special treatment to that. मान लीजिए कि एयरलाइंस है, एयरलाइंस का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम होता है ना. फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में वो क्या चाहेंगे, वो क्या चीज देखना चाहेंगे? फ्रीक्वेंट फ्लायर, आई होप आप लोगों को पता होगा. फ्रीक्वेंट फ्लायर देयर आर 3 tiers, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे करके तरह तरह के टीयर्स होते हैं. ठीक है, तो अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है. प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, there are different treatment to different groups, right? Now how do I identify who's platinum, who's gold, and who's what kind of people should be given silver treatment? हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन हमारा फ्रीक्वेंट फ्लायर है, कौन हमारे एयरलाइन को ज्यादा यूज करता है, और वो जो ज्यादा यूज करता है उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, क्या एज है, क्या इनकम है, कितनी बार उसने पहले पढ़ा है, कितनी बार नहीं पढ़ा है, ऑल दिस थिंग्स, राइट? And then we classify them when you cluster them. So that is means clustering technique. Clustering into different groups. There is no clear dependent variable. Okay. One another technique which is akin to clustering, it's like clustering की तरह है, उसको बोलते हैं factor analysis. तो फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है कि क्लस्टर्स में हम केसेस को क्लस्टर करते हैं, फैक्टर्स में वेरिएबल्स को ग्रुप करते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमने लिया कि एज, वैसे एज कर नहीं हो सकता ग्रुपिंग, बट लेट्स से सर्टेन वेरिएबल्स वी क्लस्टर्ड, एज, इनकम, एंड लेट्स से व्हाट इज दैट, एजुकेशन स्टेटस, and there are many variables. I can cluster these variables into certain groups. Okay, I will say that these come together, these come together, and so on. उसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस. रिसर्च में लोग गड़बड़ क्या करते हैं, वो फैक्टर एनालिसिस को रिग्रेशन की तरफ प्रपोज करते हैं. They propose factor analysis or regression which is completely incorrect. Okay, so this is a descriptive technique. Clustering is a descriptive. When there is no dependent variable, we call it descriptive analysis. Okay, so we have techniques where you have dependent variable like regression classification, and techniques where you have no dependent variable, we call it clustering or factor analysis. And there are many other related techniques like association and so on. So these are your descriptive techniques. So prediction, classification, description.
And then you have also other data mining techniques. These are not statistical techniques, they are data driven techniques that I'm not going to cover in this class. Now, let us say you have ANOVA. When do you apply ANOVA? ANOVA and chi-square. This is also important. So that also I will cover. When you have Y as a categorical and you have X1 and X2 as what is it? Quantitative. ठीक है जब आपके x1 x2 क्वांटिटेटिव होते हैं और y जो है कैटेगरी देयर इज नो क्वालिटेटिव वेरिएबल हियर इन x1 x2 क्वालिटेटिव नहीं है तब आप लगाओगे इसमें एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मींस वेरिएशन किसके कारण आ रहा है वेरिएशन किस चीज के कारण आ रहा है द वेरिएशन कैन कम फ्रॉम let's say you have machine parts, you are doing a machining of parts and you have various suppliers of parts. So let's say there are supplier 1 2 3 दो तीन supplier and x2 is your quality is x2. No, so quality will be y actually. It's नहीं मैंने गलत कर दिया इसमें one second. ये मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया था यहाँ पे उल्टा होगा y is your quantitative and x1 and x2 are qualitative only. ठीक है they are not quantitative, they are qualitative. Quantitative could be quality of a machine part, for example, machine part, and x1 could be supplier, दो तीन suppliers आपने लिया. X2 could be what is that time of supplying, for example, your week of supply, or it could be only supplier and you have quality of a machine part. Now whenever you have quantitative as y and qualitative as these independent variables, then you apply this ANOVA. और अगर आप इसमें एक quantitative भी add कर देते हो +1 quantitative, then you apply what we call as ANCOVA, analysis of covariance. But of course वो जो problem है that should be amenable for ANCOVA or ANOVA analysis. So ANOVA हम क्या करना चाहते हैं कि given this supplier and given this time of supply, whether it is different from others or not, that is your ANOVA analysis. Finally, if both are qualitative, y and x1 and x2 were qualitative. Now these are not clear dependent relationships. These are not clear dependent. You can say they are not actually dependent relations. There are some relations, some correlation. We say correlation. Okay. So then you apply chi-square. When both of them are qualitative, then you apply chi-square. So we saw basically y is qualitative, x is qualitative, we apply chi-square. Y is quantitative, x is qualitative, we apply ANOVA. Y is quantitative and x can be quantitative or qualitative, we apply regression. And y is qualitative and x1 and x2 are quantitative or any other values, then you apply classification. And finally, if there is no relationship, there is no dependent relationship, you can apply cluster modeling. Okay, so that was the brief discussion I just wanted to present. If you have any questions, we can take now and we'll wrap it up. Participants have any questions? Any question you can ask, dear candidates? Raise your questions. No, ma'am. Okay. You? I think really you are explained very well.
so there is no query or no doubt. So officially, on the behalf of the Bharati University, I extend a really hearty vote of thanks to you, sir. You shared your Thank you, ma'am. knowledge and experience with us, and definitely it will helpful for our research scholars. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Best wishes to all of you. I'm leaving now. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you so much, You really sir. explained well, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Sir is left, so I am end of this session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.